Alright, guys, let's quickly see another game by Capablanca. He was black and he played one of my favorite openings out there, the French defense. E46, D45, knight C3 takes. Wow, the fourth Knox variation with the dubious French. Interesting question. Bishop D7, what is the idea behind black's strange move? To just play bishop C6 and trade out his bad bishop. This is the first recorded game with the fourth Knox variation. This first recorded game, really? Drop a knight on either. Yes, the black plays exactly. Exactly. I've tried this line once in a game of Blitz and it worked out quite well. I'm yet to try this line in standard because I'm not sure if it has some good results or something. I just never tried because the lines were very resourceful and I just didn't have any need to. But yeah, I know it exists. Bishop d3, knight d7, knight g6, bishop g5. Illogical. Okay, knight g3 and knight et2 is the modern way to play it, right? Bishop g5 illogical. Really? How is that illogical? You can play takes like bishop e7. I know do club pairs tend to bang out without any question. How can a move with simultaneous development pins the wrong? Why is last one is likelihood of trades? Yeah, that is for sure. All the blacks were only by the rules. Yeah. Trade. Every page trade prefers them. Knight d2 takes how is it? But knight can still go back. How is he preferring more takes? How is it saying more trades? Yeah, knight d2. Yeah, exactly. You're way back. Rook e1 b5. Nice, damn. Bishop six. ये तो गलत है knight f6. Queen e2 castle takes c4. Okay, interesting. I would go take. अच्छा नहीं bishop versus knight में नहीं जाना. That's not good for us. Bishop अच्छा भी है. Nice observation. I like it. Takes c6. Okay, d1 94. Queen c अच्छा मौका देख के यार. Bishop. Hmm. Knight f6. Bishop f6 आ जाएगा. Clear. Knight f6. Knight e5 interesting. Queen d4 is good, but takes c3. Right? Yes, we should remember every swap. Yeah, I know every swap is chorus of Bethlehem. Belatedly realized that he should keep pieces on the board. However, now that move proves a clear waste of time. Says it. Castle C3. Bishop F3 was interesting, huh? The alternatives were super solid with Bishop F3, C6. सही बोल रहा है यार स्लावा ये सब आए स्ट्रक्चर्स आ ही जाता है सो डोंट बी अफ्रेड हम्म ओनली ऑन पेपर गुड B6 Queen C2 is dubious question shouldn't black damage white's pawn structure by chopping the knight on F3 yes he should and shouldn't be any problem takes bishop B7 yeah why not and then you can go with G6 king H8 so like everyone shouldn't Kappa gets too cute better to bite with this GF3 G6 and the demonstration H7 yeah king H8 GF3 G6 this I thought even pawn takes is fine because of the pin but yeah this is even subtle H7 is taboo true king queen C2 is dubious yeah it looks like king H8 yeah मतलब थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके खेलना पड़ेगा यार मतलब इतना कामली आप नहीं खेल सकते ब्लैक को सॉलिडिफाई करने दे दिया हो गया काम but unless कुछ दिख नहीं रहा actually this is too solid maybe I don't know what can buy two maybe rookie one H4 भी नहीं आ रहा है G3 H4 something like that not working C4 can be interesting maybe C4 Queen B3 angling for D5 somewhere right there I don't know I'm just curious to see because
Such positions obviously prefer black in the long term if the trades are there and if there's only even one single move made by single and accurate blue move made by white, though I personally don't prefer to play such positions like from black. I mean, I do, but it's just kind of a bit, just contradictive at the same time because it is just a matter of time where white figures out and it's slightly not good in my opinion. If white plays properly and obviously such slow move, told you such slow moves doesn't help. I mean, I'm not sure about the depth, but after bishop f4, yes, exactly. Something angling around the center, e5, maybe knight e5 is a good idea. Bishop b7 and then b4. Yeah, yeah. Interesting stuff, whatever it is. But yeah, okay, my engine is going on a bit depth, I guess. Saying that it is. Yeah, I mean e5 करके खेलना थोड़ा सा uncomfortable हो सकता है white के लिए हल्का सा. I mean obviously there's a way. Yeah, this is the best version of black can have, like the best. हाँ, ये तो black के लिए practically भी बहुत ही ज्यादा better है. I'm sure if the engine plays more games, जो नया feature है which is just 26 में, then it is gonna give second preference if the game goes on like that. Mhm. So yeah, whatever. Yeah, so whatever. Queen c2, king h8, shouldn't black here, white stopping here. ठीक है, whatever. Bishop h7 नहीं, because takes g6. Yes, knight d2. g6. जरूरत तो नहीं है rook e8 खेल लो, bishop b7 खेल सकते हो. Like seeks the break e5. हाँ, e5 breakup ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे. c5 कहाँ ही प्रिपेयर करोगे. ठीक है, e5 थोड़ा अच्छा लग रहा है. Poor judgment, bishop h7. A g6 मर नहीं गया. फिर आ रहा है, आई थिंक. मारा मारा. rook h8. Queen h4, king e7, bishop h6. कहाँ? Hmm, मारा मारा मारा. Queen, bishop g7. That looks good. Fights dream of attack phase, so it was PT Barnum who said there is a sucker born every minute. ये कौन सा narrative है? क्या बोल रहा है? Sucker born every minute. What? ऐसे नहीं बोलते language. I disagree with your assessment of the sack. White exact three healthy pawns for the sack. Exposed black energy student assessment भी advantage white. यार मतलब होना तो चाहिए, बट बिशप g7, क्वीन h5 टेक्स नहीं यार, सारे पीसेस गेम में है और तेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा रुक्स लाने में, तेरे मैं e5 देके कॉम्पेंसेट कर लूंगा. लाइक बिशप g7, क्वीन h5, किंग g8, bishop h6, queen f6. So that doesn't work. So let's say bishop h6, queen f6, takes rook e3. That looks a bit dirty, huh? Yeah, that looks a bit unsound. Bishop g7, queen h5, takes bishop h6. What if we go e5, huh? e5, queen g4, तो नहीं है, queen f6, rook e3. They are interesting for sure. Rook g8, the problem is queen h8, queen e7. The problem is bishop h6, no, queen e7, queen h5. Takes, queen h7, bishop h6, takes, queen h5, then bishop rook c8. Interesting है, but ठीक है. Though I would prefer black. I mean, मुझे भी नहीं पता कैसे करना है, but I would prefer black. Exposed black extension. Answer in the end, what we want doesn't count for much. It's what we get that matters. But हाँ, exactly. White square. Wait. Black has a grip of a light square. हाँ, that's true. White passes can't be pushed. Yes. Queen e7 is a bit inaccurate. Huh? I would play. No, I would play Queen e7 only. Shit. Rook e7. Wallah. That's good. Simple idea. Queen d6. Queen g8 का idea. वही बोल, Queen g8 आ जाए तो मजा आ जाए. But nice. Good move. Queen e6 is a bit dubious. Black shouldn't be in rush to swap pawns.
White simply attacked f3, c2, f3, f4. Now light scores, which punches dot white square. He clamps down on e5, preventing. अच्छी तो मूव है, तो क्या दिक्कत है? रुकजीत आ रहा है दो। रुकजीत में क्या दिक्कत है? रुकजीत में क्या दिक्कत है भाई? हाँ। अरे एक सेकंड, कैप्पा को एंड गेम में जाना है, ठीक है, इंस्टिंक्ट वाज टू स्टॉप डाउन टू एंड गेम। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तेरे को एंड गेम में जाना है, बट फीलिंग स्लीपी डूड। अरे कंट्रोल के वंडर, what's the problem with starting out with rook h8? That looks fine to me. हाँ देखो, कुछ भी खेलता है कैपेबलांका, हाँ। गधा, जस्ट किडिंग। ही इज द गोट, आई एम द गधा। बट यार अरे ये क्या है? Really need to, yeah, but 33 depth. Queen h7 is good. Oh my god, Kappa is genius. Rook g8, Queen h5, Queen h7. डिफरेंस क्या है? कोमोडो से एनालाइज कर रहा है किसी ने, नाइस। ए आज ही कर रहा है, कौन है ये? ए आज ही कर रहा है किसी ने, वाह। न्यू ईयर वाले दिन। डीएम सन, कोमोडो। डीएम। Rook g8, Queen h5, takes, knight f3, Rook g7. This is good, but फर्क क्या है? Queen h7, एक टेम्पो का फर्क है। Rook g8 पे कुछ कर नहीं रहा है फ्यूचर में हिसाब से। Though I don't know what is the best, but yeah, it's a choice, I guess, हाँ। एंड गेम तो जाना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा डेप्थ पे, बट डजंट मैटर। f3, अच्छा वाइट लास्ट मूव वाज स्ट्रेटेजिक एरर, रियली टिपिकल फॉर द टाइम वाइट। कोई ऑथर है जिन्होंने गेम नोटेट नोटेट कर रखा है, एंड कैपेब्लांका, सॉरी, हमारे ऑथर लाइक द गोड साइरस लकड़ा वाला is kind of opposing, and just making some contradicting statements against the commentator. f3, rook g8, rook g7, very good. Queen h7, king h7 is very good. Black's king squares, light square active and very easy. f3, rook g8, g2, ठीक है, हो जाना चाहिए तो फिर। So, नहीं। यहीं कहीं नीचे होएंगे, यहीं कहीं हनुमान मंदिर वगैरह। ठीक है।
The ugly bishop walks a few paces back. ठीक है. हम्म. तुम लाइट्स का ब्लॉकेड बना रहे धीरे धीरे. अब C5 आएगा कहीं ना कहीं तो. अभी 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 नहीं, B5 कर सकते हो आप एक पहले. इजंट नेसेसरी है, ठीक है. रुक F8. नाइस मूव. वाह, क्या आइडिया रुक F8 का. रुक G8 समझ में गया. रुक F8 का आइडिया क्या है. नाइट G5 को एड्रेस करना. हाँ. वाह. नाइस मूव. C4 इज अ ब्लंडर. टेक्स अच्छा. अच्छा अच्छा, इसलिए B5 की जरूरत नहीं है. C5 बूम. Bishop E3. Doesn't this help white? Bishop E3 does. Question. Doesn't it this help black? Of course it does. Knight C5. Queen. Knight C5. C4. Knight E3. Yes, of course. Yeah, of course. Yeah, of course it is. But Bishop E3 isn't much better. Knight G5 fails too. Yes. अच्छा, मारना नहीं है. What? Seriously? I thought mar kicking rook G. Rook G7 or something like that. मार के rook G7 नहीं कर सकते क्या? I mean something like this. I'm sure king H8 is good. Fears to help white anymore. King G8 is the only move. Wow. It helps stay in the game. Really? मारा नहीं जा सकता क्या? Something like this. King D7 or rook G7. H4 this. H2 rook G7. नहीं. आइडिया क्या है किंग? कौन नहीं दे रहे हो आप? अच्छा. यार. हाँ. Feels to help by it. C4 D7. More and more active. But for instance H3. सब इधर पिटाई हो रही है. हम्म. हम्म. और बिशप G5 में क्या गलती है? अच्छा, बिशप ही दे रहे हो. इंटरेस्टिंग. Not the right time to simplify. I like it. B5 H3 rook F8 king F1. Bishop E3 नहीं हो रहा. Knight G5 भी नहीं हो रहा. Bishop E3. DC5. Bishop F8. What is the point of black's last move? मस्ती ले रहा है और क्या. मस्ती कर रहा है. Bishop B7 भी जा सकते थे एक्चुअली. बट ठीक है, मतलब क्या ही होगा. Bishop B7 कहीं ना कहीं रुक F2 कहीं ना कहीं आ सकता है. रुक F2 या फिर रुक E1 कहीं ना कहीं. यस, वही वही. जस्ट अ प्रिकॉशन में. Bishop C5 exercise critical decision. We can capture the bishop, but we can also sack the piece and judgment. This is the ramifications. Is it worth it? I doubt if it is worth it. Why not just play it simple, dude? Why क्यों करना है? Rook G2. Rook G2. Let's say Bishop B4 takes. No, actually, we do have a threat. Rook G1 is a threat. Rook G1 is a threat. Bishop. Knight H4. नहीं. Rook G2 takes. Takes. Hmm. Bishop E3, rook E3. Oh, Bishop E3, rook E3. Bishop G1, rook G1, G3 takes. यार ले तो सकते, देखो नाइट. एक सेकंड. नाइट G5 तो प्रॉब्लम. यस, नहीं ले सकते.
Knight g5, bishop g5. ले तो सकते हैं यार। नाइट g5 पे तो रुक g5 भी तो आ रहा है। Yes, ले सकते हैं। Yes. It is worth it. कैपेब्लांका ने खेला नहीं खेला? ऑफ कोर्स खेला। नाइस। बिशप d1 पे ट्राई। रुक e6 पे पिटाई हो रही है। हम्म बिशप d6 पे रुक होना है। बिशप e3। बिशप वाह। मतलब मैंने सोचा बिशप e3। अरे मैंने सोचा ही नहीं बिशप e3। हाँ सोचा कि बिशप e3। बिशप h4। अरे यार नहीं देखा। क्या कर रहा हूँ? फोकस। बिशप e3 पता नहीं क्या हो रहा है। रुक h2 हो जाएगा। ओनली मूव कॉन्सेंट्रेट। नाइट g4 तो check. After rook d1, black has a short with short circuit the defense. Bishop g4, bishop h4, rook d1. Black has a short with short. See if we can find it. I'm not sure if I can find it, dude. Really not sure. Bishop f2? No, no, I mean rook f2. F2, rook f2. Rook f2 maybe. हाँ जी। Rook f2. Bishop f2. हाँ मतलब rook f2, rook f2. Rook f2 ही आना चाहिए आपके। Bishop f2 is also interesting. Rook f2 यार simple. Hey bishop f2 lol. Rook f2 में क्या दिक्कत है? Bishop f2। Rook f2 में क्या दिक्कत है? कुछ तो दिक्कत होगी। Check. Knight g5. No. Bishop f2 is good. Yeah, भाई। Bishop f2, rook f2, bishop f2, bishop f2 takes. Rook f2 नहीं है ना? Rook b7 भाई मैं बात चेक आ रही है। चेक आ रही है। चेक 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 आ रही है। यस यस यस। चेकी चेकी आ रही है। चेकी चेकी पिटाई हो जाएगी। पिटाई हो जाएगी भाई। Shift only move. नहीं। This is not good. F3. King कितनी pretty king से checkmate होगी। अच्छा नहीं होगी। Shift to keep in mind that black was a 13-year-old and bite the IMGM strength Cuban champion. Wow सच में? Damn बच्चों जैसे लगा रहा है। Shift to ठीक है। Shift to check. Check I guess you can use king g4. Check 6. I mean yes. Bishop to the bishop's hypnotic oscillations continue. The bishop get used to this kind of thing in the book. The math always seems to work first upper side of the wall. Rook f2, rook f2. Check, check, push. Rook h7, push, push. Rook d8. Bishop d3, rook d8. Wow, king h6. Rook f2 is a blunder, of course. Let's do the h4, bishop f3. Rook d5 takes. Oof. Dirty, dirty भाई साहब। बाप पूरी 12 बजा दी। नाइस गेम। आई एम नॉट श्योर क्या सीखा मैंने। सिंप्लीफिकेशन। बट मजा आया देख के। जी जी सिक्स। डरना नहीं ऑन द सैक्रिफाइस। ट्रेड आ जाओ एंड गेम। ट्रेड नहीं करना जल्दी से सिंप्लीफाई नहीं। रुक एफ8।
C5, पीछे को प्रिकॉशन, कोई दिक्कत नहीं है। बूम, सैक्रिफाइस। वाह यार, वाह यार, नाइस यार। मजा तो आया गेम देख के भाई, मतलब ठीक है, मजा तो आया। The book has started, so not gonna judge anything yet, but मजा आया भाई, कुछ तो मजा आया भाई, क्रेजी क्रेजी। क्या क्या है, कैप ऑन द अटैक, डिफेंस, एक्सप्लोडिंग इम्बालांसेस, accumulating एंड एंडिंग्स, जो भी है मजा तो आएगा भाई। देखते हैं, दो ही हुए हैं। लेट्स सी, फटाफट खत्म कर देते हैं बुक, फटाफट, एक सेकंड, and then let's move on to some other books which are by Cyrus Lakdawala. नाइस यार, जस्ट गुड स्टफ, मजा आया। पिछले वाले गेम में भी बढ़िया कंटिन्यू टाइप था, इसमें भी बढ़िया। फ्रेंच डिफेंस टेक्स टेक्स, बढ़िया अटैक था, नाइस, गुड स्टफ, जस्ट नाइस स्टफ। फुटनोट्स के लिए जा सकते हैं। चीयर्स, हैप्पी न्यू ईयर।